Okay students, today I am going to explain you about the grouping of resistances. You will find it in current electricity. Okay. Then what is grouping of resistances? At first let us take what is resistance. We know Ohm's law. What is Ohm's law? Suppose there is a conductor having resistance R and a potential difference is applied across this and current passing through this is I. Okay, then we say that Ohm's law states that V potential difference across the conductor resistance is proportional to the current passing through this. Okay, आप लोग सब लगभग ओम्स लॉ जानते होंगे. दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. एक्चुअली यू कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ओके, यही से शुरू होता है ओम्स लॉ. देन व्हाट वी कैन से दैट पोटेंशियल ड्रॉप, if potential drop of V is applied across any conductor, let us say this conductor be AB, then current passing through this is, if I, then V according as ohm V is proportional to I. Whether condition, physical condition, it means temperature and मैकेनिकल स्ट्रेन है ना. जैसे कार को खींच देंगे तो उसको क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा ना. टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन शुड बी अनचेंज्ड. दिस कंडीशन मस्ट बी फॉलोड. अगर ये आपका नहीं होगा, टेम्परेचर वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा. मैकेनिकली आप उसको वायर को खींच दीजिएगा, स्ट्रेन विल बी डिस्टर्ब. देन दिस इज नॉट गोइंग टू follow the rule. Okay, then what we can say, under the conditions, which type of condition, temperature and mechanical strain is if unchanged, then current passing through this conductor is directly proportional to the potential difference applied across this, V proportional to I. Then what V is equal to Ri. You know this is what? This is proportionality constant. Okay, this is said to be proportionality constant. Okay, and how we will define this? R is what? That is the ratio of potential difference across any circuit and ratio of potential difference applied across any circuit and current passing through that. Okay, this is your mathematical expression. Now let us try to know what is the resistance. है क्या फिजिकली, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर. ये तो समझ गए. आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? विल डिफाइड V बाई I. V और I को रेशियो ले लेंगे, दैट विल गिव यू R. ऑब्वियसली यू नो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड करंट इज एम्पियर. देन दैट रेशियो ऑफ 1 ampere volt and 1 ampere current is known as 1, and unit of this one is what? That is ohm, and it is written like this. This is the symbol of ohm. तो इतना तो आप लोग मैथमेटिकली जानते हैं, लेकिन एक्चुअली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या चीज? देन लेट अस से दैट दिस इज AB इज अ कंडक्टिंग वायर, सपोज मेड ऑफ कॉपर. ये क्या है? एक कॉपर का वायर है. देन व्हेन वी अप्लाई ए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A and B, क्या किए? इसका पॉजिटिव टर्मिनल A से जोड़ दिए किसी भी सेल का,
और नेगेटिव टर्मिनल बी से जोड़ दिए. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट अप्लाइंग ए वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर एट टू डिफरेंट पॉइंट्स. इसके वोल्टेज दे दिए. देन व्हाट विल हैपन, ए करंट विल पास थ्रू दिस conducting wire. At the same time, I am saying, a current will pass through this conductor. What is the conductor? This conductor, I have taken the wire of copper. You may take wire of aluminum, wire of any metallic conductor. Then what is the nature of this? It is allowing to pass current through this. Okay, अपने से current pass करने दे रहा है. But at the same time, it resists this conductor, resists the flow of this current. इस current को बहने दे रहा है अपने से through, but उसी का resist भी, विरोध भी कर रहा है. And this resisting property is known as the resistance of the conductor. Okay. कंडक्टर का जो करंट पास करने दे रहा है अपने थ्रू, और एट द सेम टाइम क्या कर रहा है, उसके करंट को रजिस्ट भी कर रहा है. तो उसका जो ये नेचर है, नेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज नोन एज रेजिस्टेंस. ओके, एंड द डिवाइस, दिस वायर इज नोन एज रजिस्टर. वायर इज सेड टू बी द मैटर, वायर इज सेड टू बी resistor, and this thing which allows the current pass through this, but at the same time it resists the flow of current, that is said to be resistance. Okay, then here at which point we are interested, we are interested in grouping of resistance. grouping कैसे करते हैं? Okay, grouping कैसे करते हैं? Then now let us come here again. This resistance is expressed as this one. The symbol of resistance is this one, and here we write R for resistance. Then we can connect so many resistances together in two different ways. ओके, क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2-3 रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है, जो भी है, हाउ मच इट इज, देन इट मे बी कनेक्टेड इन 2 ways. When we connect so many resistance together, that is known as grouping of resistance, and it is done in 2 ways. First is known as series connection, series grouping, and other is known as parallel grouping. Okay, we make a group of 2 or more than 2 resistances together in 2 types: series combination, parallel combination. Now let us explain. Let us take how these resistances are connected in series and how these resistances are connected in parallel. Suppose we take 3 resistance. Okay, हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 resistance. Suppose this is, there are 3 resistance having the resistance of R1, having the resistance of R2, and having the resistance of R3. There are 3 conductors, and we have to connect these. Then if we connect these, suppose the first terminal of this one is क्या, any conductor will have 2 terminals. And let us say it's to be a starting and finishing end, a starting end, finishing end, a starting end, finishing end, है ना. तो हर वायर का 2 टर्मिनल होगा ना, 2 छोर होगा. फर्स्ट को हम लोग कह रहे हैं स्टार्टिंग एंड, और लास्ट को कह रहे हैं finishing it, last end. Starting and finishing and starting and finishing. When we connect it, finishing to a starting, finishing to a starting,
and first point and last point are left on. क्या किए? One by one, finish to start, and first and last are left open. Then this connection is known as series connection. Okay. Okay. In other way, we can say that if in another way we can explain this, if a potential difference is applied across this, क्या है? ये आपका इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए. ओके, देन सेम करंट should pass through all the three resistances. Same resistance should pass through each resistance. है ना? Same current. Let us say that this current is I, this is V. Then same current I will pass through this, I will pass through this, I will pass through this. Okay? What I have told to you? आप तीन रेजिस्टेंस ले लीजिए, तीनों रेजिस्टेंस का फर्स्ट टू लास्ट कनेक्ट कर दिए और फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों को ओपन छोड़ दिए. तो ये कनेक्शन हमारा क्या कहलाया? सीरीज. और क्या करते हैं इसमें? इन अदर वे वी कैन एक्सप्लेन इट. व्हेन वी कनेक्ट इट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स ए बैटरी, then it must pass the same current through all the resistance. देखिए क्या है? Let us say I current pass through दे दे, then I current is passing through R1, R2 and R3. Then if the same current passes through all the resistances connected, then applied a potential difference V, then this is said to be connected in series. Okay. Now let us take the another case. Suppose we have three resistance again of having value R1, R2, R3. Okay, and we connect it starting, finishing, starting, finishing, starting, finishing terminal. Okay. Then if we connect all the starting terminal together and all finishing, पहला छोर को सबको एक साथ, दूसरा छोर को सबको एक साथ, then this connection is said to be parallel connection. And what condition should be followed here? यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ क्या होना चाहिए? What was the condition here? Same current should pass through all the resistances. Okay. Now let us see here. Here, suppose this is connected with a cell having EMF or potential difference V. Then what we say? That if we are applying here a voltage V, then this voltage is being applied here. First terminal क्या है आपका? यहाँ पर connected है. सेकेंड टर्मिनल क्या है? इसका एन है, इसको कह दीजिए फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर. तो फर्स्ट वायर से कैसे कनेक्टेड है? इसका पॉजिटिव, और लास्ट से क्या है कनेक्टेड? इसका निगेटिव. तो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस? हियर द पोटेंशियल ड्रॉप इज, इसके थ्रू कितना, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज कितना है? Now let us see here for the second resistance. Here the plus terminal is connected here, minus terminal is connected here. Then same potential drop is here. यहाँ आपका क्या है? यहाँ भी voltage कितना है? अब यहाँ देखिए, let us see at the third. What is this potential? Positive terminal is connected to first terminal. Let us see here. And negative terminal is connected to second terminal. Then here again potential drop is V. तो इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें सेम करंट इज पासिंग, है ना?
in series circuit, same current passes through the circuit. And it means same current passes through all the resistors. Same current. And here potential difference is same. Here potential difference is V. Here potential difference is V. And here potential difference is V across the first, second, third part. Okay. Then this is said to be connected in parallel. पहले क्या बताया कि सब जितना तीनों रेजिस्टेंस लिए उसका फर्स्ट टर्मिनल एक जगह कनेक्ट कर दीजिए, इसका सेकंड टर्मिनल एक जगह कनेक्ट कर दीजिए. दिस कनेक्शन शुड बी कॉल्ड विल बी कॉल्ड व्हाट? पैरेलल कनेक्शन. इसका क्या है? सेकंड टू फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट ओपन. देन दिस विल बी सेड टू बी in series connection. Okay, now what we try to do here, I am trying to determine the value of equivalent resistance in series. Okay, then